Assalamu alaikum everyone. आज का topic is how building something of your own changes your life. 2017 में I clearly remember that there is nothing in the world seeing your dreams fulfilled or seeing from आपने कहाँ से start किया था and where you are now alhamdulillah. एंड 2017 में आई वाज लाइक अ ब्रोक स्टूडेंट। तब तो मेरा मतलब इरादा भी नहीं था, ऐसे मुझे पता भी नहीं था मैंने क्या करना है, राइट। आई वाज टोटली अ ब्रोक स्टूडेंट जस्ट स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया एंड द काउच पोटैटो फेस। देयर इज एन इन्फ्लुएंसर माहम, उनको मैंने फॉलो किया बिकॉज ऑफ हर नानो वाज वेरी क्यूट, बट शी टुक हर पेरेंट्स ऑन उमरा, ठीक है। और मैं वो स्टोरी शेयर करी थी वहां पे विद हर मदर and her father being there, and they were staying at a really good hotel, मतलब she was just sharing her stories of her umrah and how उसके parents उसके साथ थे और वो लेके गई थी अपने parents को। I just remember that being my goal, I want to do that someday। ये मेरा तब गोल बना था in 2017। और even though I was totally broke student, मुझे नहीं पता था कैसे होगा कब होगा, बट वहां पे वो मेरी एक जो बकेट लिस्ट होती है उसकी टॉप पे वो लिस्ट चली गई थी कि आई वुड लव टू हैव मुबारक कल्ला फॉर हर, माशाल्लाह शी डिड, ऑब्वियसली उसने बहुत मेहनत करके वो वहां पे पहुंची। शी इज एन आर्किटेक्चर beside being an influencer, or and jazakallah to her for sharing that, because that showed me that this can happen too, a girl can take her parents on umrah। तब मेरी bucket list के top पे था कि I want to not just go on umrah but I want to take my parents on umrah and make them feel really special, they were staying at a good hotel and all of those things, and I wanted बस अपनी pocket money में भी मैं उन्हीं parents से ले रही थी, ठीक है। I was living on the money of those parents जिनको मैंने लेके जाना था एक दिन, ठीक है। So that was that phase, and fast forward how many years, 6 years, एंड आई डिड दैट अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई मुझे चांसेस भी नजर नहीं आ रहे थे, एंड आई रियली डिडंट थिंक इट विल हैपन दिस ईयर, बट इट हैपेंड, बिकॉज वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के घर पे यू डोंट गो विद मनी और विद रिसोर्सेज और विद एनीथिंग, यू गो व्हेन ही कॉल्स यू। सो आई बीन डाइंग टू गो, बट दैट ब्रिंग्स अस टू दिस टॉपिक के पहली बात ये कि वो क्या कहते हैं कि इट्स ऑल अल्लाह ताला का फजल। जैसे हजरत हाजरा की मैं एग्जांपल शेयर करती होती हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है। इफ यू वांट एनीथिंग इन लाइफ, आपके कुछ भी गोल्स हैं, इट्स नथिंग फॉर हिम। अल्लाह ताला के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो परफेक्ट वे में देता है। मतलब ही विल गिव यू योर विशेस, वो ऐसी मतलब आपने उतनी नहीं सोचा होगा, आपकी इमेजिनेशन उतनी नहीं होगी, जिस तरह वो करेगा जब वो देगा अपनी वुसअत और अपनी कुदरत, और उससे देता है वो आपके लिमिटेड से जो बिलीव्स है उनमें से नहीं देता, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लीज हैव अ कनेक्शन विद अल्लाह ताला, नो हिम, ट्राई टू नो हिम, नो हिज बुक, नो हु ही इज। एंड फिर आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स है ना कि आई कांट डू इट, यस यू कांट डू इट, रियली यू कांट, आप कौन होते हो। बट दैट बीइंग सेड, दूसरी आपसे क्या रिक्वायर्ड होता है इस सारे में, यू हैव टू, मतलब मैं वो हजरत हाजरा की एग्जांपल जो मैं बार बार कोट कर रही हूँ, कि हजरत हाजरा की क्या एग्जांपल मिलती है कि ही वाज the tawakkul she had, even being there on Khana Kaaba, I was asking Allah, give me the tawakkul that Hajra alayhi salam had on with you, right? उनके साथ क्या हुआ था, आई विल शेयर दैट स्टोरी के हजरत इब्राहिम को हुक्म हुआ था कि छोड़ के आओ उनको, हजरत इस्माइल को और हजरत हाजरा को। हजरत इब्राहिम छोड़ के मैदान में, देयर वाज नथिंग देयर, जस्ट माउंटेन्स एंड रड़ा मैदान, और पानी तक नहीं था वहां पे। एंड वो पहले तो ऑब्वियसली घबरा गई कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के। एंड देन शी अंडरस्टूड कि दिस मस्ट बी अल्लाह ताला का हुक्म। तो उन्होंने कंफर्म किया बस कि क्या ये अल्लाह ताला का हुक्म है। एंड हजरत इब्राहिम डिडंट इवन टर्न बैक, बस उन्होंने सर हिला दिया कि यस, एंड शी वाज ओके गो। वहीं पे उनकी स्ट्रगल वहीं पे रुक गई कि मुझे ना छोड़ दो। उन्होंने कहा जाओ। दिस वाज हर तवक्कुल ऑन अल्लाह ताला के इफ ही इज लीविंग मी हियर, इट मींस ही विल टेक केयर ऑफ मी, ही मस्ट हैव अ ग्रेटर प्लान फॉर मी। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, वो जो तवक्कुल है, मे वी ऑल गेट टू एक्सपीरियंस दैट। एफसीपी पता नहीं कौन सा टेस्ट है, एग्जाम दिया है और वो फेल हो गई हूँ, एंड आई रियली फील आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो रिमेंबर हाजरा अलैहिस सलाम, ठीक है, वो उनके बच्चे को छोटे से, और वो उनको छोड़ के जा रहा है वहां, हजरत इब्राहिम छोड़ के जा रहे हैं। एंड इफ अल्लाह ताला वांट्स मी टू बी हियर, जहां पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, एंड शी एक्चुअली लॉस्ट एवरीथिंग, वहां पे कुछ भी नहीं है, पानी तक नहीं है, एंड बट शी ट्रस्ट अल्लाह ताला, ठीक है, कंप्लीटली। वो जो रेजिस्टेंस हम में होती है, हम सबमिट नहीं करते ना, हम सबमिट नहीं करते टू विल ऑफ अल्लाह ताला, बट यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग, और यू आर एग्जैक्टली वेयर अल्लाह ताला वांट्स यू टू बी, ठीक है, ठीक है। दैट इज योर स्टोरी। अभी आप जहां पे भी हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट सबसे पहले तो कि यू आर वेयर अल्लाह ताला वांट्स यू टू। बट देन व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट हाजरा अलैहिस सलाम टू। तवक्कुल का जो हम मतलब देते होते हैं कि डू वी स्टॉप ट्राइंग। यहाँ पे हजरत हाजरा ने क्या ये सोचा कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ पे लेके आए हैं, तो अब वो करे जो भी करे, वो आसमान से पानी बरसाई है जो भी, आई डोंट केयर, ही शुड डू समथिंग। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यू हैव टू ट्राई। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड। उन्होंने सफा और मरवा के, मैं उम्रे पे गई थी तो उसका पार्ट ही है, दैट इज व्हाट उम्रा इज लिटरली, जस्ट तवाफ करना है काबा को और सही करनी है, ठीक है, वो 7 चक्कर लगाने। आई यूज्ड टू थिंक पता नहीं उम्रे में क्या क्या करना होगा, इट्स जस्ट दैट, वो हजरत हाजरा के तवक्कुल का सिला अल्लाह ताला उनको दे रहे हैं कि वी हैव टू डू दैट।
स्टिल टुडे, और क़यामत तक ये होता रहेगा। बट शी डिड हर पार्ट, लाइक जो उनको समझ आ रहा था कि वो कभी इस पहाड़ी पे उधर जाती थी और कभी उधर से इधर, सर्चिंग फॉर वाटर, जो उनके बस में था। बच्चा भी रो रहा है पीछे, और हम कहते हैं हमारी ये मजबूरी है, हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे ये सर्कमस्टांसिस हैं, लाइक कीप हर सर्कमस्टांसिस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, कि वो अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हैं, बट लाइक बिकॉज शी नोज के आई रियली वांट दैट थिंग, आई रियली वांट वाटर फॉर माय किड, अल्लाह ताला ने इस सिचुएशन में डाला है, बट लाइक आई हैव टू डू समथिंग। और फिर उन्होंने वो चक्कर काटे, 7 चक्कर, बट इट्स रियली टफ एंड शी डिड दैट। और फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, देन कम्स लाइक हिज पार्ट, वो उनके पाँव से, इस्माइल अलैहिस्सलाम के पाँव से वो चश्मा जारी होता है, एंड लाइक दैट इज अल्लाह ताला शोइंग यू कि आपकी एफर्ट्स आपको चीजें नहीं दिलाती जिंदगी में, ठीक है। मतलब हजरत हाजरा को वो चक्कर काटते हुए कहीं पे पानी नहीं मिला, ठीक है, वो किसी और रिसोर्स से आ गया। तो मे बी लाइक यू वर लाइक, वो आप चक्कर काट रहे थे, कोई टेस्ट कर रहे थे, कोई पता नहीं आप क्या कर रहे थे, आई डोंट नो अबाउट, यू आर डूइंग योर पार्ट, और आपको लग रहा है कि मैं कर रही हूँ अपना पार्ट, और फिर भी मुझे चीज नहीं मिल रही। तो चीज आपको, आपके यकीन करें, आप जितना मर्जी कुछ कर लेना, चीज वहां से नहीं मिलेगी, चीज मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। तो हैव दैट ट्रस्ट इन हिम, वो कहीं और से खोलेगा जमजम का चश्मा, वो आपकी उस एफर्ट से नहीं शायद खुलना। आई डिड सो मच एफर्ट, लाइक वो जो मैं 6 साल पहले मेरे दिल में ख्वाब आया था कि आई वांट टू डू दिस, बट लाइक आई वोंट से कि वो मेरी एफर्ट्स की वजह से हुआ था। देयर आर पीपल हु वर्क वे हार्डर देन मी, और वो नहीं मिलता उनको बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से होता है, एंड रिलाई ऑन हिम कंप्लीटली। ये पॉइंट एक बहुत जरूरी था, सिर्फ दुआओं करने से नहीं होगा, यू हैव टू डू योर पार्ट, एंड देन ही विल ब्लेस यू, लाइक ही विल गिव यू एनीथिंग। लाइक आपका कोई भी गोल, क्रेजीएस्ट गोल हो सकता है जो आपको शायद बहुत इम्पॉसिबल लग रहा हो, but he can make that happen, but you have to do your part. That is like number one lesson. और उसके अलावा फिर next thing comes के one of my like aunties relatives में ना, like you know, ये वो लोग हैं जो बातें करते थे कि what is she doing, even like let's, इसमें कोई शेड की बात नहीं है, बल्कि मेरे खुद पेरेंट्स कहते थे, मतलब मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आती थी कि ये बंदी क्या कर रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे लेट मी एक्सपेरिमेंट विद इट, लाइक लेकिन किसी को यकीन करें, नो वन बिलीव्ड कि आई कैन लाइक मेक समथिंग आउट ऑफ इट। लाइक ये जो मैं अपना, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था इन 2018 फॉर 2 years, लाइक दे डिडंट, वो उनको यही लगता था बस ऐसे ही पागल सी है और लगी रहती है तो लगी रहे चलो, बट नो वन बिलीव्ड इन मी, ठीक है। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने कुछ खुद का बिल्ड करना होता है तो यू हैव टू, लाइक दैट इज अ मस्ट फेस। और वहीं पे बहुत सारे लोग डर के भाग जाते हैं कि कोई दूसरे लोग टीयर डाउन कर देंगे, अगर उन्होंने खुद नहीं किया तो हाउ कैन दे बिलीव इन यू, ठीक है। अगर वो इतना उनमें बिलीव होता और स्टेमिना होता तो वो खुद ही कुछ कर लेते अपनी लाइफ। बट द पॉइंट इज के one of my relatives, they are seeing right what I'm doing, and they're like, I get a lot ke we are really inspired by you, and she said ke unki to take her niece under my wing, and she was like, I really just want you to make her like you. तो उस बेचारी को भी उस पे ऐसी फिजूल का प्रेशर है, I really hate to be that cousin family में ऐसी प्रेशर के look at her like you should be like her, क्योंकि everyone obviously those girls are so precious and like they will be amazing inshallah in their lives, बट शी इज लाइक कॉन्स्टेंटली उनको कह रही, और मुझे अभी वो ना, मतलब ये उम्र से वापस आने के बाद शी इज लाइक प्लीज टेक हर अंडर योर विंग एंड मेक हर लाइक योरसेल्फ, एंड वो उसने एमकेट दिया अभी और उसका नहीं हुआ, तो शी डज नॉट इवन नीड अ डिग्री, मतलब क्या जरूरत है डिग्री लेके, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको कोई ना कोई काम दो अपने उसके साथ, और उसको अपने साथ मिला लो। दैट मेड मी रियलाइज वन थिंग कि I was just like looking at the psychology of it all. Just by like working with me, obviously she will learn a lot from me and all of that. But if she like if you want to go to the level that I am at, you have to build something of your own. तो जिस तरह वो चीज आपकी लाइफ चेंज करती है ना, like nothing else can. Like I know there are a lot of very high paying jobs, and लेकिन वहां पे फिर क्या हो रहा है, अगेन द थर्ड स्टोरी कम्स इन एमबीबीएस। अब एमकेट के लिए बच्चे और भी जो ये सारे टेस्ट होते हैं, जो ये बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, पीपल वर्क सो हार्ड, और अभी बच्चे बेचारे इतने एमकेट वाले दुखी हुए हैं कि मतलब हमारी लाइफ एंड हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, एंड मे बी उसके ऊपर लेवल पे जाके भी CSS एंड ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। आई रिसीव सच मैसेजेस डेली कि मेरा फ्लैट टेस्ट में नहीं हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद अभी मेरी परसों आई वाज मीटिंग अ फ्रेंड, और शी इज लाइक माशाल्लाह शी डिड हर एमकेट और क्लियर कर लिया, फिर शी डिड हर एमबीबीएस, एंड नाउ देन शी हैज बीन डूइंग हर हाउस जॉब 2 साल, और वो कैद थी पूरी जो हाउस जॉब भी थी उसकी, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क सो मच। She did that as well, like she has done all there is to do, and now there is no job, like now like वो जो career path शुरू होता है from के मेरी please दुआ करो मेरी MCAT में टेस्ट हो जाए, now the दुआज are कि please जॉब मिल जाए। इज दिस व्हाट यू आर गोइंग क्रेजी ओवर कि मुझे डॉक्टर बनना है, एंड मतलब दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, लाइक द पर्पस ऑफ खुद मुख्तार इज टू चेंज दैट। प्लीज वेक अप। लाइक अगर आपका बहुत जेन्युइनली यू लव बायो, लाइक यू लव बायोलॉजी, यू लव हीलिंग पीपल एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, फिर मे बी यू हैव अ रीजन कि यू वांट टू बी अ डॉक्टर एंड यू शुड ट्राई फॉर दैट। एंड अगेन नहीं होता तो कोई बात नहीं, मतलब अल्लाह ताला हैव बेटर प्लान्स फॉर यू। बट आई नो कि 95 बल्कि 98% ऑफ द पीपल आर नॉट दैट। वो बस शुरू पैदा हुए हैं सुनते हुए कि डॉक्टर बनना है, CSS कर लो। लाइक वो जो लिमिटेड चॉइसेस हैं, पीपल आर चेजिंग दोज। लाइक व्हाई आर यू डूइंग दैट टू योरसेल्फ इन 2023, एंड स्पेशली इफ यू आर फॉलोइंग मी, व्हाई आर यू डूइंग दैट टू योरसेल्फ?
Please don't do that. So I really want to introduce you to the ये जो new doctors हैं बेचारे जो इतनी मेहनतें करके डॉक्टर भी बन गए और हाउस जॉब्स भी कर ली और अब उनके साथ क्या सलूक हो रहा है और अगर आपके इर्द गिर्द मे बी यू आर नॉट वन ऑफ दोज बट अगर आपके इर्द गिर्द बच्चे हैं प्लीज चेंज द माइंडसेट लाइक हमारी जो पिछली जनरेशन है दे आर स्टिल लिविंग इन देयर टाइम मतलब दुनिया बहुत बदल गई इट्स 2023 फॉर गॉड सेक और इतना पोटेंशियल है सब में इतना कुछ है और ये जो फिजूल के जो आई हेट दिस कंपेटिटिव टेस्ट लाइक सीएसएस एंड एवरीथिंग लाइक क्या पढ़ा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं है डोंट डू दैट टू योरसेल्फ डोंट डू दैट टू योर किड्स और योर यंगर सिबलिंग्स ठीक है लाइक इट्स डिजिटल एरा मतलब आप पिछले एरा में रह रहे हो और वहां पे आप अपनी सारी एफर्ट लगा रहे हो लाइक कम हियर कम ऑनलाइन बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन लाइक दैट इज माय मैसेज और the options are endless what can you do like learn some skills millions of examples around you now जो online कुछ करके बन गए and then why are you choosing that life for you अभी हमारा सोशल मीडिया कोर्स चल रहा है एंड उसमें भी आई अंडरस्टैंड लाइक इट्स नॉट फॉर एवरीवन लाइक बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन क्योंकि इसमें ना एक चीज चाहिए होती है जो बहुत से लोगों में नहीं होती एंड दैट थिंग इज लाइक व्हाट डू यू थिंक दैट थिंग इज लेट्स थिंक फॉर अ व्हाइल कि व्हाट इज लाइक वन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड if you want to build something of your own. Consistency was the major one, self-discipline was the second. लेकिन one thing that you need to build something of your own is courage, हौसला, हिम्मत. Even if you have started your journey of building something of your own, जैसे ही उस रेसिपी में से ये चीज निकलती है ना मतलब this is like the base of it, like it's like that, ठीक है कि ये उसकी बुनियाद होती है. अगर ये आप and it could shake at any time, like ये भी होता है कुछ लोग बहुत हिम्मत करके शुरू कर भी लेते हैं द मोमेंट यू लूज द करेज वो चीज क्रम्बल कर जाती है ऑन इट्स ऑन ठीक है ऑन इट्स हेड तो करेज इज वट इज लैकिंग इट्स द मोस्ट ब्रेव थिंग टू डू इन द वर्ल्ड ठीक है लाइक यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी वन लाइक आप क्योंकि बाकी हर ऑप्शन में समवन इज पेइंग यू बट यहाँ पे यू आर बिल्डिंग समथिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग एंड यू आर रिलाइंग ऑन योर एबिलिटीज एंड योर आइडियाज एंड अल्लाह ताला ठीक है उसको अल्लाह ताला को यहाँ पे भी इक्वेशन में से निकालोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बट व्हेन यू ब्रिंग अल्लाह ताला एंड यू ब्रिंग योर ओन माइंड टू इट इट्स द मोस्ट ब्रेव थिंग टू डू इन द वर्ल्ड और इसलिए आई थिंक इट्स नॉट फॉर एवरीवन लाइक आई रियली डोंट थिंक एवरीवन हैज द करेज टू डू इट वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है तो दिस इज वाई कि ये गुड़ सबसे मीठा है क्योंकि इसमें जो डालना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है फिर इसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी इट्स अबाउट फ्रीडम ठीक है जो फ्रीडम आपको मिलती है जब आप मालिक होते हो आपने यू हैव समथिंग ऑफ योर ओन इवन इफ लाइक पैसे की बात हो टाइम की बात हो एनर्जीज की बात हो इन एवरी एस्पेक्ट लाइक वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा इफ यू वांट लाइक दोज रिवॉर्ड्स लाइक यू हैव टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन एंड यू रियली हैव टू think about it like even my team member one of my team member she's amazing I love her and she's like a big part of the team so's की team का and she had a business idea ठीक है वो जो काम यहाँ पे करी she was like I can turn this into a business and I was like yes you can and I am like here for her and I have like literally encouraged her to do this like this is amazing idea अब उस पे डिपेंड करता है कि like will she have enough courage maybe leave the job या फिर जॉब को करते हुए भी साइड लाइन पे like उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी मतलब उसको ये जॉब भी करनी है because she needs the money जो यहाँ से आ रहा है and then like she built something of कोई इतना amazing idea आया है साथ में that will take a lot of courage a lot of मेहनत sidelines पे करने का and सारी जिंदगी मेरे साथ काम करती रहे मतलब she will grow a lot इंशाल्लाह she has grown a lot अभी भी मतलब वो मेरे साथ तब से है जब से सोच शुरू हुआ है तो अगर मतलब मे बी वो एंड तक अगर सिर्फ मेरे साथ काम करती रहे तो जो उसको रिटर्न्स मिलेंगे जो लाइफ वो बिल्ड करेगी मतलब वो बहुत लिमिटेड होगी फिर भी बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर समवन एल्स एंड अगर वो अपने उस आइडिया पे जाके काम कर लेती है तो लाइक द पॉसिबिलिटीज द ऑप्शंस आर एंडलेस फॉर हर आई सी दिस ऑल अराउंड मी इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक भरोसा ऑन अल्लाह ताला एंड ऑन योरसेल्फ कि you can make that happen like nothing can change your life the way building something of your own does मैं इसको काफी फॉर ग्रांटेड लेती हूँ बट व्हेन आई सी अदर पीपल जो काम कर रहे हैं किसी और के लिए वट एवर देयर फील्ड माइट बी लाइक दे माइट बी एन ऑफिसर आउट देयर अभी जैसे हमने उमरा पे जाना था क्योंकि लीव चाहिए थी राइट तो देयर वर 2 people इन द ग्रुप जो हम गए आई हैड लाइक अदर रिलेटिव्स विद मी एज वेल तो जॉब कर रहे थे ना तो दे लाइक हैड टू लाइक इतना लंबा चौड़ा उनका प्रोसेस था इवन माय फादर लाइक ही इज एन ऑफिसर देयर बट लाइक उनको इतना लंबा जॉब का वो एप्लीकेशन देना है और फिर वो हो नहीं रही अप्रूव वहां से नहीं हो रही और वहां से इतनी लंबी छुट्टी नहीं अप्रूव हो रही है एंड आई वाज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई डिडंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट व्हाई बिकॉज़ आई हैव बिल्ट समथिंग ऑफ माय ओन ठीक है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई हैव टीम्स नाउ जो कर रहे थे लाइक इट्स सच अ बिग ब्लेसिंग बट मतलब आई जस्ट वांटेड टू शो यू पीपल के हाउ इट चेंजेस योर लाइफ लाइक यू कैन गो ऑन लाइक 1 month लॉन्ग उमरा ट्रिप उमरे के लिए तो आपको फिर मिल जाती है बाकी वेकेशंस के लिए डोंट गेट लाइक आपको कौन छुट्टियां देता है इतनी ज्यादा लाइक यू आर लाइक सो डिपेंडेंट लाइक योर लाइफ इज लाइक लिटरली इन चेंज if you are working for someone else जैसे मैं कह रही हूँ it's not just about money it's about like your time freedom that is like unmatched and there are just so many options and you have the guidance yeah I'm here to guide you like
व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ, लाइक मुझे नहीं समझ आती तुम लोग क्या कर रहे हो, बट प्लीज लाइक गिव इट अ ट्राई. इस सेशन के बाद एटलीस्ट हैव दैट realistic point of view. If you like want like all those big dreams achieved, and I have a student like आगे जाते हुए like at least like be aware of the society of the time we are living in, कि हम किस वक्त में रह रहे हैं, और बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लाइक आप आंखें बंद करके अगर आप चेज करते रहेंगे उन टेस्ट को जिनके मतलब आई एम लाइक मेरा खून खोल जाता है. लाइक आई वाज जस्ट सो हार्ट ब्रोकन सीइंग माय फ्रेंड द अदर डे. लाइक शी हैव वर्कड सो हार्ड फॉर इयर्स फॉर द ड्रीम दैट द सोसाइटी सेल हर, और जो उसके पेरेंट्स ने उसे सेल किया, एंड देन अब क्या हो रहा है उसके साथ. ठीक है, तो प्लीज डोंट लाइक आपके छोटे कजन्स हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, डू योर पार्ट. एंड अगर आप खुद ऐसा करें तो प्लीज लाइक एटलीस्ट ट्राई. एंड इवन दैट फ्रेंड, शी इज अमेजिंग फोटोग्राफर, and she can like she's like I can earn way more like अगर मैं अपनी वो फोटोग्राफी फील्ड को pursue करूँ. and she's a really good photographer. Victoria is like example के कैसे उसने अपनी पूरी कंपनी बिल्ड की on a skill that she learned herself at home, फोटोग्राफी की. ठीक है, तो लाइक जो ऑप्शंस हैं ऑफ बिल्डिंग, इट्स नॉट जस्ट कि गो आउट एंड यू नो कोई प्रोडक्ट्स ही लाइक उसके में बहुत इन्वेस्टमेंट, लाइक यू डोंट नीड big money to build something of your own. Like the only thing जैसे मैंने कहा you need is courage and like guidance obviously चाहिए होती है कि हम किस डायरेक्शन में जाएं, क्या करें. There are so many options for that now. Like you can't have an excuse कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं. Like there are so many options जो that are like ready to guide you. Like, I have a course like BME. It's a bigger commitment. 4 to 6 महीने का वो हो चुका हुआ है. So many people currently working with me, you know, to build something of their own. उसमें आके भी even लोग निकल जाते हैं क्योंकि they realize it's not for them. So I understand that, like, but like at least give it a try, at least explore your options. And that is the beauty of building something of your own. There was another thing जो पिछले 4 सालों में while working, क्योंकि that was like my, जैसे होता नहीं कि एक golden wish list होती है, like it's something that out of fairy tale, something that you know can't happen for you, but you wish, because आपको पता है कि वो चीज नहीं हो सकती, तो फिर आप ऐसे डायलॉग्स बोलते हो कि I would give anything to get that. ठीक है, तो आई यूज टू से दैट अ लॉट. लाइक आई वाज लाइक आई वुड गिव एनीथिंग टू हैव 1 year where I can study Quran full time in an institute, and I knew I can't do that because obviously like मेरे businesses है दो, मेरे अंदर वो बहुत बड़ी एक ख्वाहिश थी. And now because I have built something of my own, I have built teams, I have built systems, so I got that opportunity. ठीक है, and it's still like nothing in life is going to be roses. Like कोई भी चीज आपको ऐसे नहीं रख के दे दी जाएगी. I saw that opportunity के I can do it. And then I did it. I went and got admission in Aluda, Lahore, and I am like, I'm now a student. But again, वो जो flexibility है, you know, who does not have something of their own, they can't do that. ठीक है, I can, right? Like I can choose कि मैं कमाने पे कितना फोकस करना चाहती हूँ और मैं अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पे कितना फोकस करना चाहती हूँ. ठीक है, कल को if I get married, तो I will again have that option कि मैं अपनी फैमिली पे कितना फोकस करना चाहती हूँ, and कितना मैं, you know, the freedom that comes with building something of your own is insane. And I think everyone should pursue that. मतलब at least pursue that once. ठीक है, मतलब if it does not work out, if it's not for you, like के लिए आगे इतने pathways खोल देता है कि you won't be disappointed कि मैंने try क्यों किया था. So at least please try. I have like मैं BME का बता रही थी. If you are serious about building something of your own, तो how I can help you with that is कि एक तो SMM course है, and even in SMM जब मैं उसकी भी promotion कर भी रही थी, क्योंकि I know the reason why we have SMM courses, क्योंकि उसका भी number 1 purpose यही है, people learn social media and build something of their own. ठीक है, I don't want people working as social media managers. Even if they like start working as a social media manager, they build their own pages एंड वो अपने ब्रांड्स बिल्ड करें वहां पे. ठीक है, सोशल मीडिया पे ऑफ एज अ सोशल मीडिया मैनेजर. लेकिन जैसे मैंने कहा कि आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग कि नहीं, दे डोंट हैव द करेज टू बिल्ड समथिंग ऑफ देयर ओन, देयर कंटेंट विद कि किसी के साथ काम कर ले, किसी का काम कर ले. तो इसलिए फिर आई हैव दैट ऑप्शन सोशल मीडिया मैनेजमेंट का ना, कि यू कैन लर्न दैट स्किल एंड यू कैन वर्क विद अदर ब्रांड्स. बट उसके बाद लाइक जो कोर्स है ऑन खुद मुख्तार, द मेन थिंग लाइक दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, जो हमारा कोर फोकस है, दैट इज BME, बिजनेस मेड इजी, A to Z of you know starting and building a successful online brand. That is like its tagline. तो वो we used to do one, like हम एक साल में एक करते हैं. अब this is like the final version I'm creating, but that is like a very extensive course like for the people जो definitely जिन्होंने अपना कुछ start कर लिया हुआ है या फिर वो करने जा रहे हैं, and they're very serious about it. Everything you need to know वो उसमें सिखाई जाती है. एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एन ऑनलाइन ब्रांड, बेशक आप प्रोडक्ट का करना चाह रहे हो या सर्विस का करना चाह रहे हो. जैसे लाइक बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन चेंजेस योर लाइफ, नथिंग एल्स डज. लेकिन उसकी वही बात है कि जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है. तो मिठास उस जैसी किसी चीज की नहीं है, बट उसमें जो एफर्ट डालनी पड़ती है,
एंड नंबर वन थिंग इज करेज, कंसिस्टेंट, जो सेकंड आंसर आया था, यू हैव टू रियली, कंसिस्टेंट से भी ज्यादा आई वुड से पेशेंस, लाइक थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है, बिकॉज पीपल लाइक लूज पेशेंस, लाइक वो सबर नहीं कर पाते, यू हैव टू बी, सबर का फल मीठा होता है, ठीक है, तो सबर एंड करेज, लाइक दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड। मनी, पैसे, इन्वेस्टमेंट, लाइक हर चीज आ जाती है, हर चीज हो जाती है, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड। अ लॉट ऑफ मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मेरे माइंड में आती है, द थिंग्स दैट आई बिलीव इन, एंड उनमें नंबर वन थिंग हमेशा यही रहेगी कि गो बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, बिकॉज दैट इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन, दैट इज व्हाट हैज चेंज माय लाइफ, एंड दैट इज व्हाट आई विल preach forever at Khudmukhtaar at least. Allah Hafiz, दुआ में याद रखिएगा।